Hey guys, welcome back to our channel Cooking with Amma. So guys, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल येट डिलिशियस रेसिपी लाई हूँ जो लगभग आधा घंटा लेता है बनने के लिए और इवन लेस अगर आप सारी प्रेपरेशंस पहले ही करके रखते हो तो. एंड द रेसिपी इज़ टमेटो राइस और इन तमिल हम उसे बोलते हैं तकाली सादम. एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. So guys, for tomato rice, first we'll be taking a pan in which we will be adding about 3 tablespoons of oil. We will let it heat for about a while. Now that the oil is heated, we'll be adding chopped tomatoes and onions to the pan. Now we will be adding salt to taste. After that, we will be adding the spices. You can add additional salt because we are anyways going to mix in the rice in it. Now we have added about 1 teaspoon of dhania powder or coriander powder, half teaspoon of turmeric or haldi, about 1 teaspoon of red chilli powder. Now mix it nicely and let it fry for about 5 minutes on lower or simmer flame. You can also cover the pan with a lid so that the frying or cooking procedure is fastened, but I am allowing it to cook like this. अब आप देख सकते हो कि जो वेजिटेबल्स है उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल साइड में हो रहा है. दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि हम राइस ऐड कर दें. राइस आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए. इट्स अप टू यू हाउ मच यू ऐड टू इट. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच क्वांटिटी यू वांट टू मेक. एंड बाद में देख लीजिएगा इफ़ यू वांट टू ऐड एडिशनल सॉल्ट टू इट. Now mix the rice nicely and let it be the pan fry for about a minute or so. And your tomato rice is ready. Serve it hot and enjoy. So मेरे से तो नहीं रुका जा रहा है. I'm going to have it. And what are you guys waiting for? जाइए and ये वीडियो ट्राई कीजिए and do let me know in the comment section below कि आपको कैसी लगी. Don't forget to like and share my video, and if you want me to make more such videos then don't forget to subscribe to my YouTube channel, that is Cooking with Amma, and bell icon press कर देना ताकि every time I upload a video आपको update सबसे पहले मिले. So bye bye.